Good evening to you all and wish you all a very happy new year. Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa, District Latur in Maharashtra State is organized a world record daily webinar series 2. Today there is 301st day of the series and the keynote speaker for today's session is on dais Honorable Mrs. Pari Joshi ma'am. So firstly, I heartily welcome to you, madam, for the dais. Thank you so much. I welcome the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bedkar sir. Also welcome faculty members of my college and all those dear attendees. The topic for today's presentation is role of parents in school progress. Now this topic is going to present, as I have mentioned, Honorable Mrs. Pari Joshi ma'am. She is at present serving as a principal at Banyan Tree, Bhopal, Madhya Pradesh. So with this brief introduction, now I request you, madam, please start your presentation on the topic role of parents in school progress. You are most welcome. Thank you so much for the beautiful introduction of mine. First of all, I would like to welcome all of you. A very happy new year to all those who have joined our link. And Dr. Bedkar sir, thank you so much for giving us, giving me the opportunity to speak about this very crucial and important topic, where I would say that school organization and the management, here we have some stakeholders. We have few stakeholders, 2, 3, 4 stakeholders are there. Every school runs on over these stakeholders: the management, the organization, principal, teachers, and yes, most important, the parents. Parents, where we talk about the parents are the most important unit, where we should understand that the involvement of parents, or the partnership, I must say that not the involvement, the partnership with the management, with the organization, with the principal, with the staff members, and with entire team of a particular school, the partnership of the parents of 100% is very required for the progress of a school. How? If I divide it into 6 or 7 units, so we can speak about that. Like if I talk about the parenting, so where parenting starts, the parenting starts from home. Yes, the parents are the first teachers of a child. But after the parents, directly a child comes to school, where the world actually opens up for the child, right? And here you need to understand that the partnership between a school and parent, the partnership between the entire school atmosphere and the atmosphere of home is very required for the holistic development of a child. And if we talk about the progress of a school, so we need to talk about the holistic development of a child. When you actually emphasize on the development of the child, you can talk further about the progress of a school. Because we know the root of the school, the root of any school is the development of child. For sure, the partnership, involvement, volunteering, or any word I can use, the further word I can use, how the collaboration of parents, principal, management, and the organization takes place, that is really very important, especially nowadays where the children are becoming more sensitive,
more sensible. So, and they are very, very aware of their surroundings. They need affection, they need love. The guidance they are actually getting from, n number of sources where we are actually living. We are living in the world. The world is open through the social media, through, through all AI, and everything has, come up. So the children are getting the information. But yes, children are not getting the love, children are not getting that affection, where the school actually can step on to give them that, back support of love and affection, where the child can feel the same atmosphere, the child can feel the same, the feeling of home he or she can feel at school too. But how? It will work only where the parents' involvement, where the parents' partnership also would be there for 100% with the school. So the parents, parents' partnership, parents' involvement, volunteering, anything you can say, collaboration, that is very, very much important with the school. And now the question arises कि ये कैसे होगा? So, if we go to the questions, so the first is parenting, where the school starts training kind of session for the mothers, for families, where we organize the activities, kind of where the parents can understand what, in which area they are actually facing the problem to handle their child, to handle their children. So there, in that area, a school can support the parents. There parents also get that support, and that support is, that support becomes a bond between school and parent. So here now again, if I talk about the volunteering, so every school nowadays organize different kind of activities for the development of children. For I would say that marketing also needs to be done somewhere. If you have a school, if you have an institution, if you are running an organization, so that should be done too. So parents are the most important unit to market also your school, your organization, your institution, because all the positive effects, all the positivity which their children are getting from the school, so that is the original publicity of your institution, original publicity of your organization. And when parents get satisfied with the services which school is giving to their children, then only the school can progress. I totally believe that academics should be very strong, and your infrastructure should be very strong. Everything, every area, I understand. But the main thing, when you work on sentimentals, when you work on feelings of the children, then only you could get that original, you could get that real progress of your organization. So that is very important. Somewhere I need to be bilingual too, if you allow me, because some of the parents are also joining, joining us, where I could be in Hindi somewhere. So अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, so how can you utilize the parents, how can you utilize the parents abilities also, कैसे हम उनको एक रिसोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. पेरेंट्स में कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं that can be also utilized by school to progress. So the parents partnership is very much important for the sentimental, emotional level, on the emotional level also, on the practical level also. So here, if I talk about the learning at home. So learning at home, a child is getting the atmosphere at home, and now he or she is coming to the school.
So the same atmosphere, so the same affection, if he or she gets here, so the improvement, the progress of a child also becomes very fast, or the faster, I must say. So here, and human resource, the word human resource is very important. And we need to utilize this term very smartly, very effectively. And how can you utilize that? When you have a strong bond, when you have a very positive relationship with the parents, trust me, your school have more, more strength by on the side of organization, on the side of management, on the side of your whole development, on the side of your progress. You need not to worry about the marketing, you need not to worry about anything to speak up about your school. The parents will speak about your school, the parents will speak about their children. Because if the children are happy, if the children are growing, if the children are satisfied over there in your school, so nothing is there to worry about the marketing, about the publicity of the school. There is a publicity, there is a real marketing, there is a real uh, real एक ओरिजिनल आपके पास में एक इफेक्टिव वो होता है, पर्सपेक्टिव होता है स्कूल का, जो पेरेंट्स एक से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं. So this is the importance of involvement of parents' abilities in school progress. And we need to understand the change of needs of parents also. Because the age difference of children are also there. If you are running a school, there is the different age of children are coming. So the requirements, the necessities, the essentials of the children are also different. So as a leader, if I speak, so you need to see whole school, whole system. But as a teacher, if a teacher can have the strongest bond with the parent, and if a teacher and a parent's bond is strong, nothing like it for the school's progress. If a teacher understands the child, if a teacher understands the children of her or his class, if she or he understands that what are the needs, what are the requirements in my class, so I can improve here. So there is a hierarchy, there is step by step we can हम ऊपर चढ़ सकते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं. So teacher is the most important unit where we can have that strong bond with the parent. And when you understand, when you get this strong bond, so that will be further, it will be very beneficial for the school's progress. So here, so many things comes in your way, and this whole system works step by step. And the first step, which has to be taken by the teachers. So teachers, first of all, teachers need to understand the needs and the necessities of their children, of their students. And if they understand this, and then step by step, you can have that bond with the parents, and the partnership of the parents with your school is very strong, very positive, and satisfactory. Because satisfaction is the most important thing which parents should have. Because emotionally also, see, they are spending on their children, they are spending, they are giving something to the school, they are giving their hearts to the school. So you need to inculcate those things, you need to inculcate those qualities into the children, and to their atmosphere, to improve the atmosphere where the child can have that holistic development. If we talk about the holistic development, that can be done only in that healthy atmosphere of the school, where the parents can also be part of the organization. They should not feel like that they are separate somewhere. They should have a feeling that they are the part of this organization. They also
stakeholders of that organization. They have that right to take the decision. Yes, there should be the limits. As a leader also, we understand that there should be the limits of participation or the involvement of the parents. But yes, we can we can actually decide that limits, and then we can get that bond, we can get that support, we can get that strength, and can use that strength to progress our school, for the progress of our school. I think I'm clear to all of you. If anybody can interact even, so I'm open up for this. If any question is there, if anybody who has joined the link, any questions are there, so I'm here to answer. Thank you so much, madam, Yeah. Thank you, for the Prashant sir. excellent presentation. Now, dear participants are requested for the discussion. Please come ahead. I completely understand this is the webinar session, but yes, when yes sir, please. So Anand sir, please. Yes, Swanan Shukla, sir, please. Yes sir. So do we need to interact Yes, about anything? Mousy Paul, madam, Yeah. please. Hello. Hello sir. Hello Hello. sir. Yeah. Good evening, Dr. Bedkar sir, Prashant sir, and good evening, madam. Good evening sir. Thank you for your wonderful presentation. And really, a kind of a relation is there, parent and child. And it is another school, basically it is informal school, what we can call it as, where we are, the child is learning from the parent, knowing the guidelines, how to behave, how to show mannerisms, Definitely. what kind of food you should eat. It is not just learning process like some lessons, Correct. but these are the life lessons what we are getting. But my question is, nowadays the parents are so busy, right? They cannot attend child to much. They are Yes. getting hardly 1 hour, 2 hours, right? And they are busy in completing their homeworks only. What I've Yes. seen, the homework it doesn't seem to be for the child, but it seems to be for the parents, and the parents are taking too much of load of it, and somehow they are getting it done from the child. So that kind of atmosphere. So how we can cope up, the child can learn with the parents, and parents will have a kind of a strong bonding and relationship with the child. So how we can develop it, because the scenario has changed 20 years back and today's scenario, there is a lot of difference. At least one parent used to stay with the children, but Yes. nowadays both the parents are working on, and they had to move further, and they are attending is as if just like other office is there. So Hmm. what you see, how we can change this scenario, and how we can give more attention and focus to the child. Sir, I And totally agree to apart from you. the affection, I mean, attention and other things, affection is very important part. That kind of relations, we are not getting nowadays. Mechanical relations are getting. Yeah. So how we can do and how we can cope up with this kind of situation? Thank you. Absolutely, sir. As a leader, I'm also running a school, and I was the, not directly, as a teacher also. I have worked as a coordinator also. So I have gone through the parents like you are talking about. They don't have the time. They don't have the time to spend 5 minutes also. Even sometimes I have seen the parents, those, unfortunately they have forgotten the child in the school only, and we need to call them that your child is with us, so please, school has been over, and now the time to take the child home. So that kind of parents also are there. But I will not blame the parents. But yes, sometimes by the 15 to 20 minutes of counseling, as this kind of parents, with 15 to 20 minutes of counseling about the parenting and
how I actually have explained in the starting that some of the schools are really organizing or really, but as a sessions, though the sessions organizing where the parents can get the tips to for the good parenting. So these kind of counseling sessions actually work a lot. But yes, some of the parents are not at all ready to come to that counseling sessions also. So for that matter, I have experienced this, that some of the teachers, those have wonderful communication skills and a wonderful parenting tips. So they had taken up the step to make the parents, that kind of parents, understand that your affection, your love to your child, and your support and your involvement with the school is very much important for the emotional level of your child. Because if the child will not be grown up with the emotional level, he or she will not work well. He or she will not give you the outcome, the results you are expecting. And further, in future, you people only have, these have to face these kind of problems where the child cannot be cannot be treated emotionally very well. So, sir, this is really a hard time to make the parents also understand that the affection, love, and the time of the parents is very, very required for their children. But yes, the schools are working hard to make them understand that this is the basic requirement for the progress of your child. So these kind of sessions we really organize after 15-20 days for the parents, and regular counseling, regular meeting with the parents. I know you also have the same experience, I also have the same experience, but the solution need to be done. Solutions and activities, some activities we organize, some of the parents really become changed. So this is something very happy moment for us that we could do, at least not for the 100%, at least for 80%. Yes, 20% are there, so they haven't been changed, but we will try our best to do that. So these are some kind of solutions we can practice about. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, I had seen. I belong to basically medical field, and I'm a professor in medical college. Oh But I wow, had seen, great. the parents worried about the results. We I call know. for parent meet, and we took the MD physician. Both were MD physician. That both were MD physician, and we told them that the child, your child is not getting cleared with all these exams. How will Hmm. pass first year? The medical. So they said, you forget about him. Whatever marks he's getting, it is okay for him, and Very true. you don't know much about my child. And this kind of negative feedback what we have given, so naturally we get demoralized. We were putting our efforts to counsel them, but the Correct. people are of a very different cadre nowadays. So I it know, becomes so sir. difficult. It becomes a barrier. Their psychology become barriers for the development of their own child. But Yeah, thank you. trust me, the counseling is the best policy. And these kind of parents, they actually need a Madam, they regular don't have counseling. time to come and visit us also. They don't have time for that. They're Yes. sending someone else, assistant or someone else. So what is the use? What is the parenting? People are really losing the meaning of parenting. Parenting, exactly, sir. I do agree to that. I do agree to that. And we all are, we all are concerned about that, and we are working for it to get that parenting tips, to get that parenting, the way of parenting which we actually got in our childhood. Yes, we could say that our childhood, could be more harder. आज जो बचपन है वो बहुत sophisticated है, बहुत सारा कुछ है, but the time which is very required, but the time of parents which is very required, the involvement of the parents, we are talking about the involvement of the parents with the school, but here the first point, that the involvement of the parents with the children is also a major topic to talk about. So I do understand,
and I hope I would be able to answerable to your questions. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Yes, definitely the counseling has a power. So Yeah, our objective is to do enforcement again and again and talk to them and change their mind. Thank you. correct. Thank you. I got my answer. Thank you. Most welcome, sir. Anyone Now, else, if I could talk? Mausmi Paul Madam, please, Yeah. welcome. First of all, good evening, Mohit ma'am. So wonderful. I mean to say points you have covered. Thank I'm you. very impressed. Yeah. I have two questions. Please. For not questions, rather. Yeah, discussion. We are actually discussion. We have a discussion Yeah, over yeah, here, and that's a good absolutely. platform which Bedkar sir actually has provided us. Yeah, yeah, yeah. So always we are very much thankful towards our Betka sir because Yes. he has created this wonderful platform. Hmm. And before starting my suggestion and opinion, very happy new year to all the participants and everyone basically. Uh, my one question is now upcoming boards are there Yes. 2024 and not only board for state government and other ICSE and CBSE board, so they have their final examination even upcoming. In many schools there Yes. will be an exam on February or maybe March because from April it will start. So my point is if you can suggest some of the PTM questions what being a parent we should ask, because sometimes what happens when we attend in our PTM session we just go and we just take care that mark sheets or that assessment sheet, but relevant questions we don't ask. Again there are time challenging areas and there sometimes we have fear even because as you were talking about that monthly basis or maybe in time gap if we can have a parenting session, for that also I have a couple of questions. So first of all, as you are fully associated with the school, so then if you can have some of suggestions from your end, so then being a parents it will be very helpful for taking a preparation, because everywhere I see that preparation is very much required. So we are not taking that much of preparation for the PTM session. We just know that we have PTM, we have to go and we have to collect the mark sheet for Correct. 10-15 minutes. But Correct. this is the 15 minutes very vital time we should utilize for our child. Yes. If Definitely. you can give us some tips, so I know many of parents we are here, so that will be really a great benefit for us. Thank you so much for raising this point on this platform, because this is really a very very important point. When we go to the school, I see the parents as parent also. The student is in the school, okay, he or she has given the examination, he or she has taken the marks, okay, the good marks, the bad marks. So the emotional level or the mental state of a student I can understand, but as a parent, why do you fear? Why do you feel that fear? If I'll go to the class, the XYZ student would have done better from my child. That is the biggest fear when we go to the PTM. Your prestige point, your status comes first, then your child comes. Very true. Why the child comes on the second position? Why don't you go and meet the teacher and your first question is that, is my child participating in each and every discussion? Is my child participating in each and every activity? Does my child smile? Is my child look does my child look happy in the class? Is he or she active? These kind of questions need to be asked by the parents first, then you go to the marks,
Then you go to the performance, because here we actually make the major mistake, because we directly go to the teacher, we demand for the copy of our child, and we see the marks. तुमने यहाँ गलत किया, यहाँ सही किया, यहाँ गलत किया, यहाँ marks कट गए. Why don't we ask the behavior of our child in the school? Because I do believe that here we all have experienced that there are so many children. The teachers are also, they also have must have this experience. The child's behavior, sometimes the child's behavior is 100% different in school and at home. My child is very, very active at home, but the same child will be very quiet, very shy at school. Why? This is the difference of atmosphere, the change of atmosphere of a school and home. So your question must be that, is my child behavioral okay? अगर आप ये क्वेश्चन सबसे पहला करें, I am not saying that you need not to be concerned for the marks, you need not to be concerned for the examinations, you need not to be concerned for the writing papers, right? But you need to be concerned for the behavioral issues of your child first, then second, third, fourth, fifth points should become, right? So these kind of questions should be asked first, that how my child behaves in school. Is he happy or not? Is he active or not? Is she taking part in all the activities or not? So that should be done first. I hope I'm answerable to your question. Yes, yes. This is a wonderful connection that you have created. I know whoever will watch and whoever now watching live. So we will have a connection with this, because we are very competitive. So always we think that why it's not 98 and why it's not 99. So this is one of the biggest thing. There we have to help our child to be a proper ecosystem in their growth parameter. Correct. Yeah. And second thing is, this is for the parents. Okay, so sometimes what I have noticed, as I'm a career counselor and a career coach, Oh, I'm wow, working very with good. I'm working with many schools and teachers and parents. So sometimes what I have noticed, ma'am, that is being a teacher, even sometime we always say that when we attend in the PTM session, that they have to improve the marks, they are not doing studies and everything. So here my point is, as you are talking about the parenting tips, okay, I'm from Calcutta, so I visit many schools in Calcutta, okay. And for my son's career time, even what I have noticed, I never been addressed that each and every month, being a parent, you must come and you must sit with the issues and everything. Okay. So how do you address this thing? Though you have covered that this is very much necessary, but each and every school, if they take initiative, they must invite that what are the values for the PTM, how they can utilize that platform in a different way when they will come back in the home. So that will be a great help. And Yes, teacher, they have to be very collaborative sometimes. I know Correct. academic pressures are there. As a counselor, actually you have that you have that sense to of all the atmosphere which has been made in the school, which has been designed in the school. The teachers are also in pressure somewhere. Yes, they have to they have to finish their course, they have to treat different kinds of children at the same time, so they have got that pressure. But yes, first of all, I would like to emphasize on this term PTM, right? This is PTM means parents teachers meeting. It's not the session of showing, flexing, or exposing something, right? Yes. So, this should be the session of parents teacher meeting. When a parent and teacher is meeting, they should understand that they are meeting
they are meeting to take that outcome or to grab that outcome or to grab that result which they actually want. And why these two partners meet with each other. Here, if parents are also there, those who are very much concerned about the marks only, the teachers are also, similarly, the teachers are also, few teachers are also there. They don't talk about any behavior, any, activities of the child. They directly talk about the marks. And in higher classes, it happens more often. So it should be somewhere, it should be checked out. It should be checked out. And here, if we go through the policy, if we go through all the terms where we actually, get all the trainings, when the teacher gets all the trainings, and many sessions for the teachers also, organized by the organization or by the government, there also all these points, the counselors cover these points, that first of all in the PTM you should cover the behavioral points of a child, not directly marks. So this is the same thing need to be understood by the parents also and by the teacher also, right? So here the topic is one, the problem is one, and the solution is also same. Yeah, but the teacher also need to understand, and 50% parents also need to understand. And this is called the collaboration. When you collaborate your part of 50%, and the teacher will collaborate the 50% of his or her part, then only we could have a holistic development of a child. So, the same problem, the same solution, but you should understand your role. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much. I know many other participants, they have questions. Yeah. Dr. Jaivir Singh sir, please. जी, आभासी मंच पर जुड़े सभी विद्वानों, गुरुजनों और साथियों को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा। नमस्ते मैडम। मैडम, मेरा एक सवाल है। शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल है जी सर, कि माता पिता अपने बच्चे को कोचिंग क्लास के लिए भेजते हैं, तो जब कोचिंग क्लास को ढूंढते हैं तो इतना तो उनको जानकारी नहीं होती कि वो कैसा रहेगा। बिल्कुल। और जब बच्चा पूरा कोर्स कर लेता तब मालूम पड़ता है कि ये अच्छा था या खराब था। तो कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं बच्चों को कि अगर उस एरिया के अंदर, देखिए कॉलेज सब तरह के होते हैं। बिल्कुल। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँगा कि हम हिंदी माध्यम से पढ़ के आए और प्राइमरी में सरकारी स्कूल में पढ़ के आए और आज हम सक्सेस है, सफलता पाई है। तो कोचिंग सेंटर में क्या डाला जाता है बच्चों के कि ये नंबर 1 कॉलेज अच्छा नहीं, ये नंबर 2 अच्छा नहीं, ये तीसरा अच्छा नहीं, ये चौथा अच्छा नहीं, 5वां अच्छा नहीं, वो फला वाला अच्छा है। क्योंकि जिसकी मेरिट हाई होती है उसको अच्छा बताते हैं और जिसकी मेरिट नहीं होती और बहुत कम फीस होती है उसको अच्छा नहीं बताते। तो बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जिस कॉलेज को नीचे माना जाता है उसमें भी बच्चे बहुत होते हैं और उसमें जगह नहीं होती और वो भी बच्चे पढ़ के जाते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर वालों की ये एक आदत है, ये एक नया ट्रेंड है उनका कि बच्चों को मानसिक कैसे दबाव डाल दिया जाए कि ये तो अच्छा नहीं, फला अच्छा है। ITI तो खड़गपुर अच्छा है, बम्बई ITI अच्छा नहीं, तो समस्या होगी ना, बम्बई वाले कहाँ जाएंगे। बिल्कुल तो वही ये तो बड़े IT की बात हुई, लेकिन कॉलेज जो प्राइवेट है इसमें मैंने खुद ये शोध किया है, रिसर्च किया है और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया जिन्होंने मेरे आसपास के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को रिजेक्ट किया और दूर वालों को किया। अब अगर उन 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं उनमें कम से कम 3000 बच्चे तो आज भी है और सक्सेस भी है। तो ऐसे में बच्चे को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, पेरेंट्स क्या करें बच्चे को, क्योंकि बच्चा कोचिंग वालों की ज्यादा सुन लेता उस टाइम में, तो हमें क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। और अगर सबसे पहली बात तो ये है
कि बड़ा बुरा लगता है जब हम इस बात को समझते हैं और हम मानते भी, हमको मानना पड़ता है कहीं ना कहीं कि पिछले अगर हम समय में जाएं तो शिक्षा का जो एरिया था ना, जो शिक्षा की जगह थी, वो हमारा कमर्शियल नहीं था। शिक्षक थे, अध्यापक थे, गुरु थे, लेकिन आज हमने उसको कमर्शियल कर दिया है। आज हम वहां पे भी सबसे पहले हमारा पैसा आ जाता है, हम इकोनॉमिकली चीजों को देखते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जब आप इकोनॉमिकली चीजों को देखते हैं, दूसरा जो पहले भी मैंने बोला कि एक पेरेंट सबसे पहले अपना प्रेस्टीज पॉइंट देखता है, अपना स्टेटस देखता है। ठीक है, आज मैं बहुत ही रूट कॉज से इसकी अगर आपसे बात करूं, आपने बिल्कुल सही बात बोली और ये बहुत ही मेजर वो है, टॉपिक है आज बात करने का। जबकि हम देखते हैं कई बार बच्चे डिप्रेस होके बहुत गलत कदम उठाते हैं और लाइफ टाइम के लिए ये पेरेंट्स के लिए बहुत मतलब पेनफुल वो हो जाता है, कंडीशन हो जाती है। और ये कहना चाहिए, आप चाहे इसको पीयर प्रेशर कह लें या कोचिंग का प्रेशर कह लें या करियर प्रेशर कह लें, आप कोई भी नाम दें इसे, रूट कॉज यहाँ से आता है। रूट कॉज फिर वहीं से आता है कि क्या पेरेंट का और बच्चे का बॉन्ड बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी चीज कि हम प्रेस्टीज पॉइंट, हमारा स्टेटस पे हम कितना ध्यान दे रहे हैं और बच्चे को एग्जैक्टली कितने ज्ञान की या किस एरिया में ज्ञान की जरूरत है, क्या हमने इसके लिए एनालाइज किया। यहाँ जब बात कोचिंग की करते हैं, कोचिंग बच्चा खुद नहीं जा रहा है, वहां बच्चे कोचिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोचिंग बच्चा तब जा रहा है जब एक पेरेंट उसको पहुंचा रहे हैं, राइट। आपका बच्चे के साथ उस बात को समझना कि क्या ये कोचिंग या इतनी फीस देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई आप गवर्नमेंट, हम उसमें पढ़े लेकिन उसके बाद भी हम इतने सक्सेसफुल हैं, क्या हम ये बात अपने बच्चे को आज नहीं समझा सकते। आप ये तभी समझा पाएंगे जब आपका बॉन्ड आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा है, जब आप उसकी जरूरत को, जब आप उसके फ्यूचर में को कैसे बनाना चाहते हैं, जब आप इसे अच्छी तरह समझेंगे तो आप अपने बच्चे को बताएंगे। फिर बच्चा किसी और की बात नहीं सुनेगा, वो आपकी बात सुनेगा। ये मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% बच्चा आपके डिसीजन पे कायम रहेगा, लेकिन हाँ, अगर बच्चा 70% भी सुनता है तो आप 30% अपने बच्चे को, अपने बच्चे की लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने प्रेस्टीज पॉइंट को और आप अपने स्टेटस को थोड़ा सा अलग रखें। हम आज देखिए, थोड़ा सा बिटर है ये, लेकिन सच है कि जब कोचिंग पेरेंट्स चूज करते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड्स ने अपने बच्चे को इस कोचिंग में डाला हुआ है एंड दिस कोचिंग इज वेरी गुड फॉर चाइल्ड। क्या आपने एनालाइज किया कि आपका बच्चा किस एरिया में जा रहा है, आपके बच्चे की फील्ड क्या है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और क्या इसके बावजूद भी उस कोचिंग में डालना जरूरी है, या कम फीस का भी एक कोचिंग हो सकता है और उसमें भी मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। सो दैट शुड बी योर कॉल, दैट शुड बी योर डिसीजन दिस टाइम टू। आई होप आई मीन नॉट 100%, बट फिर भी मैं शायद 80% इस बात के लिए क्लियर होंगी। जयवी सर। मैडम बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल है, जो हमारे संस्कारों से दूरी हो गई है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्ति की जो इच्छाएं, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इतनी इच्छाएं मत बढ़ाओ कि जो इकट्ठा मत करो, जो जरूरत का वही घर में रखो, बाकी को त्याग दो, जिससे दूसरे के काम आए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कॉमर्शियल ही हमारी मानसिकता और हमारी व्यक्ति की इच्छा, यानी इच्छा एक बीमारी है, या जो इच्छा बढ़ गई हमारी, उसने हमें घेर लिया है कि हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा पैकेज मिले। हम अपनी थाली में नहीं झांकते कि हम 2 वक्त क्या खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 1 कटोरी सब्जी खाते हैं। अगर उसका कैलकुलेशन करके देखा जाए तो शायद मैं कहूँगा कि 1 लाख रुपए हम 10 साल तक भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये हम यहाँ से निकल गए। बहुत अच्छी बात कही आपने मैडम, और आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और साझा करूंगा मैडम कि मेरे पास एक ड्राइवर के बच्चे रहते थे। वो ड्राइवर था 8-10 हजार रुपए की, 5-6 हजार की, अगर 10 साल पीछे की बात करें तो 6-7 कमाता था। तो मैं जब बच्चों को कहीं होटल वगैरह में लेके जाता था तो मैं बच्चों को क्या बोलता था, बेटा बताना नहीं, क्योंकि वे देखो मतलब उनका मतलब पैसे की समस्या होती है और किसी को शेयर करनी है चीजें। ठीक है, हम खा के आए, एंजॉय करके आए,
तो जी। ये साझा नहीं करनी। इससे क्या होता है, बच्चों के मतलब दिमाग पर असर पड़ता है। पापा वो बिल्कुल। तो मैं हमेशा ऐसी बातों का ध्यान रखता था और मेरे बच्चे कभी शेयर नहीं करते थे। ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती थी कि हो सकता है कि उसका बजट ना हो बेचारे का, हो सकता है कि मेरा बजट हो, लेकिन बच्चों पर असर पड़ता ही है दूसरे के बच्चों को देख के। बहुत सर बहुत देखिए, वही घूम करके बात आई कि आपने फिर से काम कहाँ किया? आपने फिर से काम साइकोलॉजी पे किया, आपने फिर से काम इमोशनल लेवल पे किया, और जब आपने वहां से काम किया तो आपको रिजल्ट्स उसके फ्यूचर में आगे चल करके आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। देखिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारा काम यहाँ से चलता है, लेकिन सारी जो एक्टिविटीज है ना वो यहाँ से होती है। जब आप सेंटिमेंटल लेवल पे, जब आप इमोशनल लेवल पे बच्चे को पुख्ता कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपको उसको समझाने में या आपको उसको उसका माइंडसेट बनाने में परेशानी नहीं होती। तो आपने रूट कॉज पे काम किया और अच्छे रिजल्ट्स लिए, और बहुत बधाई के पात्र हैं आप इस बात के लिए कि आप इतना आप वहां से सोच पाए उसको। जी, धन्यवाद मैडम। जी जी। ओहो। हाँ। जी। क्या बात है सर, क्या बात है। हम्म। सर एक साझा और कर दूं, मेरे यहाँ पर्दा प्रथा है और मेरी अच्छा। मिसेज पहली थी कि जो पर्दा, मैंने उनको मना किया था कि आप अपनी इच्छा से रखेंगी, नहीं तो आप आज़ाद है, तो कोई आपको नहीं कहेगा। और मेरे सभी परिवार में लगभग वहाँ से ही पर्दा हटना लगभग से शुरू हो गया। तो अभी बहुत कुछ 50% मैं मानता हूँ परिवार में मतलब कम ही रह गया है, थोड़ा माथे तक बिल्कुल रह गया है, लेकिन पूरा घूंघट नहीं रहता। सर, जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही जो बड़ी कामयाबियां होती हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी कोशिशों से वहां हो पाती हैं। एक बड़ी कामयाबी के पीछे अगर आप उसका पूरा चैप्टर, पूरी हिस्ट्री या पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहां बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वहां बहुत छोटी छोटी शुरुआत है, बहुत छोटी छोटी कोशिश है, और वो सारी कोशिश मिलके एक बहुत बड़े चेंज, एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़ी कामयाबी का रूप ले लेती हैं। तो वही छोटी छोटी कोशिश जो आपने की है, और मैंने बेडकर सर से भी सुना, वो देखिए आज वो उसने बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़ी कामयाबी का रूप लिया है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग यहाँ पे इन चीजों पे बात कर पा रहे हैं। एक बात और शेयर कर लूं पर्यावरण की। मैं पिछले 10 साल से अगर स्कूटर रखता हूं तो उसमें 3-4 बैग रखता हूं। कैरी बैग कभी नहीं लेता हूं, किसी से भी नहीं लेता हूं। और फिर भी मेरे घर में कैरी बैग का बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे दूध, कोई चिप्स वगैरह जो भी मार्केट से लाते फिर भी आती है। और मैं जब कभी कैरी बैग लाता था, मैं अकेला रहता था, तो मैं इकट्ठी करके वापस उसको 10-15 साल पीछे जाइए तो वहां से ही दे दिया करता था। तो आप सभी अगर आभासी मत से जुड़े हैं तो जरूर, स्कूटर का जमाना आ गया है, जरूर 1-2 बैग रखें, पर्यावरण को बचाएं। सर, आज हम बहुत ही, मुझे लगता है आज हम बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे सब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हमने लिया था उस टॉपिक से जुड़े हुए भी कई मैसेजेस, हम सबके थ्रू इतने अच्छे मैसेजेस निकल करके आए हैं कि इस टॉपिक के अलावा भी हमने आज बहुत सारी चीजों पे, मुझे लगता है, एनालाइज किया है, मंथन किया है, उन चीजों को हमने समझा है मिल करके। सो यू नो, दैट्स अ ग्रेट टाइम आई एम स्पेंडिंग विद यू ऑल। मैम सही बात है, आपने सही कहा आपने अंतिम में कि जो आपने कहा कि हम लोगों जब चर्चाएं यहाँ होती है तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। चाहे चर्चाएं कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म भी होती है तो बहुत सारे बिंदु हमारे जहन में नहीं होते हैं, जो हमें अवगत भी नहीं होते, और वो जानने को भी मिल जाता है। और मुझे खुशी है मैम कि आपने सही तरीके से सभी पक्ष को आपने रखा और बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाया। मैं तो यूथ हूँ और हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूँ पीजी का, और उसके बाद मैं उससे निकल करके आगे आया हूँ। और इस बीच में बेडकर सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर प्रत्येक दिन इस तरह का सीरीज चलाकर, जहाँ कोरोना काल के बाद में इस तरह का कार्यक्रम बंद हो गया आभासी माध्यम से, सभी जगह ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं अब, और उसके बावजूद भी सर ये लगातार चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। और मैं चाहता हूँ कि एक बात बोलना चाहूंगा मैम, देवीर सर भी अगर कोई सवाल करते हैं
और जब यहाँ सवाल करते तो उनसे भी मैं अक्सर, कल भी मैंने बोला था कि उनसे भी बहुत सारी चीजें जानने को ही मिलता है, क्योंकि वे भी हमसे उम्र में बड़े हैं। कई यहाँ जो भी जुड़ते हैं हमसे, उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है। किताब की बातें तो बहुत सारी बातें पढ़ी जा सकती है किताब को उठाकर, मगर जब यहाँ बैठकर आप जैसे लोगों से सुनकर जो हमें सीखने और जानने को मिलेगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस पर जब हम लोग काम करेंगे तो शायद कुछ बदलाव की बहार आ सकती है। और ऐसी स्थिति में जब चर्चाएं नहीं होती है मैम, तो कुछ भी अवगत नहीं हो पाता है। इसलिए चर्चाएं होनी चाहिए, और कम से कम आप लोग के बाद, इतनी व्यस्तता के बाद 1 घंटे का समय बैठकर सर निकाल कर इस तरह की चर्चाएं करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले 200 लोग में से एक भी बदल जाता है तो सर का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। उसमें से मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, अंतिम बात बस यही कहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम में लगातार कोरोना काल से जुड़ रहा हूँ जी। मैं भी खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ, और जल्द ही उस पर काम भी करूंगा। मैंने अंबेडकर सर को बताया है। तो जितना भी मैंने यहाँ सीखा है, जो जाना है, इसकी मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ मैं। और जो मैंने आज भी आपका सुना है, वो सारी चीजें मैं एक तैयार करके इसका पीपीटी में सर को भी भेजूंगा। क्या बात है। आपने बहुत सारी बिंदुओं को आपने जो रखा है, मैं क्या बताऊं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बिहार पटना से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, सोनू जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप बहुत बहुत सफल हों। और बेटकर सर, आज एक बहुत अच्छी बात ये भी हुई है, एज ए टीचर सर को बहुत अच्छे से, या मौसमी मैम, या मैं दूसरे जो हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, एक बहुत ही अच्छा टर्म है जो सिखाया जाता है। जब आप बेसिक टीचर होते हैं तो आपको एक पहला टर्म सिखाया जाता है कि व्हेन यू टीच अ लेसन, आपको बच्चे का प्री नॉलेज जो है उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सो हाउ टू यूटिलाइज दैट प्री नॉलेज, दैट मोर क्वेश्चन यू विल आस्क, more answers you will get, and more points you will cover, right? So जब आज की जो न्यू हमारी एजुकेशन सिस्टम है या पेडागॉजी है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहला एक बात होती है कि आप बच्चे से पूछें। आप उसको ये ना बताएं कि आप किस बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पहले उससे सवाल पूछें, क्योंकि कई बार बच्चा आपसे ज्यादा भी जान सकता है, या उसकी प्री नॉलेज आपसे ज्यादा हो सकती है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स वो बता सकता है जिससे आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। सो व्हाट इम्पॉर्टेंट इज, और ये मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, ये इसके पीछे एक बात है कि सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जब तक आप इंटरैक्शन नहीं करेंगे, जब तक आपका सेशन इंटरैक्टिव नहीं होगा, तब तक वो फ्रूट बियरिंग नहीं हो पाता। और हम सब यहाँ किसी रिजल्ट के लिए बैठे हैं, किसी आउटकम पे आने के लिए बैठे हैं, किसी कंक्लूजन पे आने के लिए बैठे हैं। और कंक्लूजन पे आने के लिए बहुत जरूरी है इंटरैक्टिव सेशन, और ये मौसमी मैम मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इससे वो कर पा रही होंगी, कनेक्ट कर पा रही होंगी, क्योंकि एज ए काउंसलर ये बड़ा वो है, बड़ा इम्पोर्टेंट एक वो है पॉइंट। सर नमस्ते। Hello madam, Dr. M. Bedke sir. Many wish you happy new year, Prashant sir, and all the participant and also the speaker. Wish you a very happy new year sir. Thank you ma'am, same to you. It was really a great session ma'am. मेरे को एक I need to ask one question. Yes please. Like nowadays we are when I talk about myself, we are having a nuclear family. Right. Oh. And about that parenting of a single child, उसके ऊपर थोड़ा मुझको चाहिए, like when we at a home when we have only one child ना, so it will be like उसको बहुत आराम से every facility will be provided to them, तो उसको ज्यादा हैरान वाला कुछ भी नहीं, everything will be taken for granted, ऐसा रहता है। तो जब वो स्कूल को जाता है तो क्या होता है, she will not be having the same kind of atmosphere. I mean, she will be expecting such kind of thing. Exactly. तो अगर कुछ भी like if she is ignored or ऐसा थोड़ा बहुत emotional या sensitive ऐसा कुछ बच्चे रहते हैं ना, तो उनके ऊपर how to handle such kind of children, that thing I just wanted to ask. मैम सडनली एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस मुझे याद आया है, तो एक मतलब एक पर्टिकुलर उसका है, ऐसा मतलब एक
सेशन था और वहां पे वो था, जब आप बच्चे को, किसी भी बच्चे को आप बच्चे से बात करते हैं ना, तो एक सबसे अच्छा जो बच्चे से बात स्टार्ट करने का वो रहता है, वो ये रहता है कि आप उससे पूछें कि आप कैसे हो, आप क्या, आपको क्या चाहिए, आप कैसे हो, आप अभी बात करोगे या नहीं करोगे। पहली बात, न्यूक्लियर फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको हमेशा से यही बोलती आई हूँ, आप बच्चे से बहुत बात करें। मतलब अगर आप घर में हैं, आप लगातार बात करें, और बिलीव मी, बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट बात तब करता है जब आप उसको सुनना नहीं चाहते। जिस वक्त आप ये कहते हैं ना, अभी चुप हो, अभी थोड़ी देर में सुनती हूँ, either mother or father, okay, I'm talking about both, right? आप ज्यादा से ज्यादा बात करिए। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा टर्म है कि ना कहना सिखाएं और सीखिए भी। आप आज बच्चे को ना कहना सिखाने के तो हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, से नो, लर्न टू से नो, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि आपको नो कहाँ कहना? क्योंकि मैम अगर आज वो नो नहीं सुनेगा या सुनेगी, तो वो कल नो सुनने का हैबिट आपको कौन डालेगा? हमारी जो जॉइंट फैमिलीज होती थी ना, वहां कई बार बच्चे को कहा जाता था, नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना चाहिए। आप उसको ब्लंट नो मत बोलिए, है ना, आप ब्लंट नो मत कहिए कि नहीं ये नहीं करना बेटा, आप ये ऐसा ना करके आप ये करिए, ये बेटर है ना। बट वो जो ना है, वो हमें आज बच्चे को समझाना जितना ये जरूरी है कि बच्चा ना कहना सीखे, उतना ही जरूरी है कि हम भी उसको कहीं ना कहें, राइट। और ये पार्ट जो है, ये सबसे ज्यादा मिसिंग है न्यूक्लियर फैमिली में। दूसरी चीज जो मैंने आपको फर्स्ट बोली कि न्यूक्लियर फैमिली में सबसे ज्यादा मिसिंग है इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशन। आप जितना बात कर सकते हैं अपने बच्चे से उतनी बात करिए। अगर वो सेंसलेस भी लगती है आपको कभी, तो बिलीव मी, आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप आधा घंटे बात कर रहे हैं, तो आपको 2 मिनट की एक ऐसी बात शायद हर रोज या हर हफ्ते मिलेगी जहां आप बच्चे पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं आपको एक वो सजेशन दे सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आई होप आपके लिए काम करेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वाकई। नमस्ते मैडम, आपका उद्बोधन बहुत ही सुंदर रहा और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं एक शिक्षक भी हूँ, उसके नाते मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल है, तो उसमें हर एक कोई है अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम की स्कूलों में ही मतलब डालना चाहता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे होते हैं, अब वो मतलब क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या कामकाज में बिजी है, तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। अब उनको इंग्लिश मीडियम में जब डाला जाता है तो वो खुद उसको समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, फिर वापस घर पे कोई गाइडलाइंस करने वाला नहीं होता है। तो मैंने 1-2 बार उनको कहा कि आप इंग्लिश मीडियम में से हटा दो, तो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या वो उसमें गलत इंप्रेशन। इस चक्कर में वो बच्चे की लाइफ है, क्योंकि एक हिंदी को छोड़ के बाकी सभी इंग्लिश में होते हैं, तो न वो गणित या न भी कुछ भी अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे में उन बच्चों के और पेरेंट्स की मतलब बच्चों के लिए भी पूरी लाइफ खराब है। तो उसमें क्या करना चाहिए, किस ढंग से उसको समझ? सर देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज ए लीडर, एज ए टीचर भी मैं यही कहूंगी कि काउंसलिंग के अलावा, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पेरेंट को समझाने के अलावा हमारे पास कई बार कोई रास्ता होता नहीं है ना। वही हमारा पहला भी होता है सोल्यूशन, और वही हमारा लास्ट सोल्यूशन भी होता है कि आपको पेरेंट को बच्चे का उस टाइम का जो करंट उसका जो एटमॉस्फेयर है, या जो करंट उसकी अवेलेबिलिटीज हैं, या जो करंट उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक चीज ये है कि एक एज के बाद हर बच्चा या हर ह्यूमन बीइंग एक उस लेवल पे होता है जहां वो खुद ग्रो कर सकता है या खुद इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन एक एज तक बच्चे को आपको एक बेसिक सपोर्ट देना पड़ता है। और ये मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपका जो लैंग्वेज है, अगर आप उसको समझते हैं और उस लैंग्वेज में अगर आप पढ़ते हैं, तो उस पढ़ाई का बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज या उसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। हाँ, हम पेरेंट्स को ये जरूर कह सकते हैं कि आप 1 साल या 2 साल इस चीज को प्लीज
एप्लीकेबल रखिए कि आप हिंदी मीडियम से, अगर बच्चा कंफर्टेबल है आप हिंदी मीडियम से पढ़ाएं। एक एज पे आके उसका दिमाग जो है या उसका अपना जो विल पावर है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा या इतना डेवलप हो जाएगा कि तब वो इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में शिफ्ट कर पाएगा और वो उसके लिए इजी भी होगा। क्योंकि कई बार मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ कि कई बार सिर्फ किसी सेकंड लैंग्वेज में पढ़ने की वजह से बच्चा कई बार उतना स्कोर भी नहीं कर पाता है, उतना प्रेजेंटेबल भी नहीं हो पाता है। तो कुछ ईयर्स के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ये सजेशन दे सकते हैं। बट यस, इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट, इंग्लिश इज द नेसेसिटी ऑफ आवर current time. So we need to learn this, we need to be familiar with this 100%. लेकिन मैडम है ना, उसके कारण है ना बच्चे में हीन भावना होगी तो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो इंग्लिश के चक्कर में वो 10 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं सर, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि कुछ सालों के लिए पेरेंट्स को ये समझाया जा सकता है कि एक एज के बाद बच्चा अपने आप ग्रो करेगा, अपने आप सेकंड लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन तब तक आप एटलीस्ट उसको हिंदी मीडियम में पढ़ने दें सो दैट वो करंट सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट नहीं, देखिए लैंग्वेज ठीक है, वो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, राइट, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज तो उसके फ्यूचर को या उसके करियर को डिसाइड कर रहा है। तो एक कुछ पर्टिकुलर इयर्स तक अगर बच्चा नहीं उतना वो कर पा रहा है, कोप अप कर पा रहा है सेकेंड लैंग्वेज के साथ, तो आप उसको उसी में हिंदी में पढ़ने दें। आप ये काउंसिल कर सकते हैं पेरेंट्स को। हाँ, थोड़ा सा सर देखिए, आपको मेहनत फिर से वही है पेरेंट्स के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लगता है अरे मैं इंग्लिश मीडियम में से पढ़ा लूंगा तो फिर मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी। सो वही उनको ये चीज समझानी पड़ेगी कि बच्चे को फर्स्ट ले आइए, रेपुटेशन को या स्टेटस को आप सेकंड उस पे कर दीजिए। ऐसे में कोरोना काल में भी प्राइमरी वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। धन्यवाद। जी सर। Yes, sir. Yes. Can I audible, sir? Yes, sir. You are audible. Clearly audible, yes. Sir. Most welcome. Firstly, Happy New Year to all, especially those who have organized this seminar continuously, and totally organized committee and head of the committee also. And now today, I very appreciate and very thankful for what we can understanding of the today's classes, whether the children is great, whether the parents are the great, or the system, today's system are the great. It is a very competitive, and I have listening so many points, very important points. My discussion is, or my confusion is that if education is one in the country, it means a formatting of the education. There is no any differentiation, state education or the local education or the system of education. For example, IS is there. In the class, in the syllabus, there is a difference. Syllabus is there. IS syllabus is there. Difference is there. The medical system is another form is there. But when we are the unification of the nationalism of the education, correct, our education should be nationalized, one education in the one country, yes, then one nation of the one country, then we can solutions or the such problems. Madam, you are very excellent experience and excellent talking about the nowadays what we have do with the children. हमारे जो स्वप्न बच्चों में देखना चाहते हैं, ये तो हमारी गलती है। इसलिए पेरेंट के पहले बिहेवियर है, तो बिहेवियर अलग बात है और रूल्स अलग बात है। हम बच्चों से कितने कनेक्टेड होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो बच्चों में अपना स्वप्न देखना अगर पेरेंट्स कम करेंगे तो जब थोड़ा बहुत बदल हो जाएगा। और एक ये जो क्या बोलते हैं उसमें एक प्रकार के इगोइज्म, मेरा बच्चा अच्छा क्लास में जाना चाहिए, तो मेरे को ऐसा कहना है, मैं एक बहुत
पुअर फैमिली से आया हूँ, तो मैं मेरे बोलने को हिचकिचाता नहीं, मैं एक क्या बोलते बेगर फैमिली से आया बच्चा हूँ, बेगर फैमिली से आया बच्चा हूँ। तो व्हाट वी कैन से दैट वी आर बेगरिंग ऑफ द लाइफ। तो वहां से यहाँ तक आने के लिए तो क्या क्या करना पड़ा वो बात अलग है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर हर आदमी बड़ा होने में एक जिद रखेगा या एम सेटल करेगा तो वो अच्छे कर सकता है। तो खाली पैसे देने के बाद, अब मैं बहुत ही, मेरा पीजी हो गया खाली 265 रुपीज में यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो अब किंडरगार्टन केजी पीजी के लिए लाखों रुपए लग रहा है, हजारों रुपए लग रहा है। गरीब बच्चे ज्ञान दे पाएंगे क्या, गरीब बच्चों को नॉलेज मिलेगा क्या, ये मेरे सामने का प्रश्न है। It is very wonderful and a tremendous situation in the today. The poor can give the good education or the moral education. ये बहुत ही अलग बात है। अगर मैडम ने, प्रेमलता मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि एक ही बच्चा है, बहुत प्रेम से बढ़ रहे हैं उसको बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसा देना, वो भी एक बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही ज्ञानपूर्वक ढंग से आपकी बात बताएं, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं मेरा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और मेरा सर ने, अम्बेडकर सर ने मेरे को चांस देने के लिए उनको शुक्रगुजार हूँ, और मेरे शब्दों ये यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। सर बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट्स आपने जो बोले, देखिए वही है कि मैंने पहले भी बोला कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं, कि आपने तीन टर्म्स आपने बहुत अच्छी बोली, कि यहाँ हम ग्रेड्स भी देख रहे हैं कि हमारे लिए बच्चा ग्रेट है, सिस्टम ग्रेट है, या पेरेंट्स ग्रेट है। और वहीं जहां हम समझ जाते हैं ना हम किसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, आपको क्या प्रोडक्ट तैयार करना है, आपका एग्जैक्ट रूट कॉज है क्या, जब आप इन पे काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपने बच्चे पे होना चाहिए। वहीं जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की बात करते हैं तो एक सवाल जैसे मौसमी मैम ने भी पूछा था कि मैम सवाल क्या होने चाहिए, हमेशा बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपको अच्छा जवाब तब मिलेगा जब आपका सवाल अच्छा होगा, है ना। और जब महत्वाकांक्षाओं की अगर हम बात करें तो महत्वाकांक्षाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन पे से उठकर ही हम आसमान छू पाते हैं। अगर आप जमीन की वो ग्रेविटी इस्तेमाल करके जंप नहीं लगाएंगे तो आप आसमान में छेद नहीं कर पाएंगे, ये भी पक्की बात है। तो जमीन से जुड़े रहना आसमान में छेद करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी महत्वाकांक्षा को सवाल बनाते हैं, या हम अपने बच्चे की खुशी, उसके करियर, उसके फ्यूचर, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी को सवाल बनाते हैं। अगर आप सवाल ये है कि मेरा बच्चा कहाँ खुश है, मेरे बच्चे की क्या ग्रोथ है, मेरा बच्चा कहाँ एक्टिव है, तो सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सवाल ये है कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है मेरे बच्चे में, तो सवाल गलत है। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जयवीर सिंह सर, अगेन यू रेज्ड योर हैंड प्लीज। एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम, कि बच्चों को संघर्षशील भावना और संस्कार देना आवश्यक है। धन्यवाद। बिल्कुल सर। थैंक यू डॉक्टर स्वानंद शुक्ला सर, मौसमी पौल मैम, जयवीर सिंह सर, सूर्या व्यास सर, Shankaraya sir, and Premlata ma'am for the nice discussion. Now today's there is a special discussion which run for 45 minutes, and you participants have actively participated in the discussion session. So thanks a lot to you all. Now I request the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Betkar sir, for concluding words. You are welcome, sir. थैंक यू प्रशांत सर, और आज के रिसोर्स पर्सन प्रिंसिपल मैडम मिसेस परी जोशी मैडम, जो कि बनियन ट्री स्कूल भोपाल एमपी से है। तो आज मैडम को मैंने 4 बजे रिक्वेस्ट की शायद कि मैडम आज स्पीच आपका हो सकता है क्या। तो उसके पहले क्या हुआ था, 2-3 बार मैंने शिफ्ट किया था स्पीच, और मैडम को खाली इन्फॉर्मेशन देना, मैडम आपका स्पीच ये डे पे आ रहा है,
ठीक है सर, ओके आई विल एंगेज, ऐसे ही उनका एक्सेप्टेंस रहा। तो आज जब मैं लिस्ट देखा तो 2-3 रिसोर्स पर्सन को पूछा तो आज फंक्शन में है, कोई काम में है, वो रहता है, प्रायोरिटीज़ रहते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते मैडम का नाम सामने आ गया। ऐसे मैं बोला नहीं, मैडम को इतना शिफ्ट होने के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा ही। तो मैं 4 बजे रिक्वेस्ट किया मैडम को, मैडम ऐसा ही इमरजेंसी है, मैडम के पास वो इंटरनेट नहीं है, आप जुड़ सकते हैं क्या इस वेबिनार में। तो मैडम ने एक्सेप्ट किया, क्विक एक्सेप्ट किया विदाउट एनी, और खुशी से वो ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए। मैंने जब से फिर जो मेरी जो प्रायोरिटीज़ रहती है, लिफलेट बनाना, यूट्यूब बनाना, ये सब मैंने जब चालू कर दिया। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि आज पहले दिन, पहला साल, सभी को मुबारक भी है। और इतनी अच्छी ओपनिंग हमने की है कि एक अच्छा स्पीच, क्योंकि हम सभी टीचर हैं मगर पेरेंट उसके पहले है। बिल्कुल हाँ, सर, तो बिल्कुल पेरेंट सर। होने से हमारे छोटे बच्चे रहेंगे, हमारे भाई के रहेंगे, हमारे और इसके रहे तो सभी के लिए जो क्या रोल रह सकता है, जैसे कि स्कूल के स्टेक होल्डर, प्रिंसिपल, संस्था चालक, डायरेक्टर, टीचर्स, क्या गार्डियंस और एक्स स्टूडेंट, ये सभी का जो कोर कम बनता है, इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप हो सकता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे अगर टीचर सभी बात को समझे सभी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारी तरक्की हो सकता है। आप प्रिंसिपल रहते हुए भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस आपने यहाँ शेयर किया, और इतनी अच्छी डिस्कशन आज हो गई कि उस पर कुछ मेरा कमेंट्स रहना ये कुछ अच्छा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा है। भविष्य में भी आप हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे। जब आपको लगा कि चलो ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, जब आपका स्टोर हो जाएगा डाटा, तो आप वो इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे। धन्यवाद काली मठ सर, धन्यवाद अपने प्रशांत सर, सभी को, जयवीर सिंह जी, सूर्या व्यास सर, प्रेमलता मैडम और अपने शुक्ला सर, थैंक यू। और टू ऑल, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। Thank you so much to all of you to participate beautifully. Thank you प्रशांत सर, आपने हम सब लोगों को बांधा एक साथ में, सबका इंट्रोडक्शन और सबको हो गया। Thank you so much. Bye bye. Happy New Year once again. आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। Bye bye. धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। Just wait, madam, for formal vote of thanks. Okay. Within Okay. 1 minute, I will clear. Okay. So, thank you, sir. Shri Kumarswami Mahavidyalaya, Ausa, District Latur. As we know, organized well. We have completed 301st day, and it was very special. The today's session, Sir, that ma'am have delivered her lecture within very short time. विद्यासागर सर, Madam's lecture was run only for 16 minutes, but the discussion was run up for 50 minutes. So it is a very special for us, because you only the person, madam, within 16 minutes you explain all those details. No points have left in your lecture. So sincerely, clearly, the presentation was very nice. Really, it was very informative for everybody. You explained that roles and responsibility of the parents in school, how parental involvement in education helps children in school, then the importance of family and schools, as well as the relations in the educations of the parents, teachers and students. Now these points you cover very nicely. So I am very, very thankful to you, madam, for being with us and given a wonderful lecture in session. Thank you so much. I thanks the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Betkar sir. Also thanks faculty members of my college, Dr. Sanjay Kale sir, Dr. Praveen Kamble sir, Dr. Sudhir Garar sir, Honorable Praveen Woodge sir, and others. Also thanks Shankaraya sir, Mausmi ma'am, Dr. Swanand Shukla sir, Jayveer Singh sir, Surya Vyas sir, for the nice discussion in the session, in the series. So, and also thanks all those dear participants who joined the series regularly, encourages us, and you people are there. So we are moving our series ahead. So thanks a lot to you all once again. Thanks a lot, Dr. Sonu Kumar sir, my friend. Now I request, I think everybody have filled the feedback link which is given in the chat box. Again, those who have not filled, the session is still 5 minutes open. So thanks a lot once again. Please, now the session is over with the kind permission of chief organizer. थैंक यू, थैंक यू। विद्यासागर सर, थैंक यू प्रशांत। विद्यासागर सर, आप कुछ पूछना चाहते थे क्या?
नो सर, ऐसे हैंड रेज हो गया था, जस्ट कोई हाँ, पूछना कोई नहीं, बात बस वही ट्रैवल इशू पर कुछ पूछना चाहता। हो गया डन सर, थैंक एवरीथिंग इज डन। थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, शुक्रिया। ओके नो। Bye everyone. बाय। Feedback link, please, sir.